children, today let's start with chapter number 5, that is conservation of biodiversity. So in this chapter we will study about biodiversity. So forest is most useful renewable resource. So they are national wealth in India. About 21% of the country total area consists of forest land. So forests are home to several kinds of plants, animals and microbes. So let's study about the importance of forest for habitat of flora and fauna. Right? So we can say that forests provide habitat to wide variety of flora and fauna, and species of plants are together called flora and the species of animals are called fauna. Plants के species को क्या कहा जाता है flora और animals के species को fauna. ये biodiversity को maintain करते हैं, smooth functioning of the ecosystem में ये important role play करते हैं. यहाँ पे आपको variety and variability of microorganisms देखने को मिलेंगे. They are essential for flora and fauna found in the forest. यहाँ पे lost होता है of any of the component जो आपकी इकोनॉमिक इकोसिस्टम को क्या करता है, इफेक्ट करता है. मेंटेनिंग ग्राउंड वाटर, फॉरेस्ट मेंटेन ग्राउंड वाटर लेवल बिकॉज फॉरेस्ट सॉइल एब्जॉर्ब रेन वाटर ड्यूरिंग द रेन, और ये अलाउ नहीं करता, ये इवोपरेट नहीं करता. मेंटेनिंग एयर ह्यूमिडिटी, फॉरेस्ट एक वाटर शेड की तरह काम करता है लाइक जेम्स स्पॉन्जेस. स्लोइंग डाउन द रन ऑफ एंड स्लो रिलीजिंग वाटर, रिचार्जिंग ऑफ स्प्रिंग्स, ये किसके लिए हेल्पफुल होता है, फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर द सर्वाइवल. प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, जो अपर मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, इट इज कैरीड अवे बाय द फास्ट मूविंग एयर ऑन वाटर. किस प्रोसेस से, सॉइल इरोजन के प्रोसेस से. राइट नाउ प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल, ठीक है. फॉरेस्ट सप्लाई वुड एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम्स, फाइबर्स, बैम्बूज, मेडिसिन, हनी, रेजिन, सॉइल, फ्लैक्स, सेल्स, पल्प, ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं, कि आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. Now deforestation means large scale cutting of trees is called deforestation. जिससे क्या होता है, habitat loss होता है plants का, animals का, microorganisms. So what are the factors? अब हम factors की बात करते हैं, कौन कौन से factors responsible हैं. First is procuring land for cultivation. देखो food requirements की वजह से हम क्या कर रहे हैं, agriculture produce जो है उसको हम, जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, रेजिन्स, शिफ्टिंग कल्टिवेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके डिक्लाइन ऑफ फॉरेस्ट एरिया के लिए भी रिस्पॉन्सिबल. Now building houses and factories. So forests are being cleared to acquire land and construction of houses meet the shelter requirement of such vast population. So since most of the items used by us are manufactured in factories, rapid growth in population has also put a great pressure on factories. So construction of roads, railways, tracks and dams, and we can say that modern world to join remote area, some important cities, new roads and railway tracks are being constructed, जो किसमें result हुए, deforestation. Right, dams are constructed for electricity and irrigation purpose, but they are acquire a large area of land, जिससे क्या कहता है, deforestation. Now making furniture or using wood, हम फर्नीचर बनाने के लिए फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, ठीक है. फ्यूल के लिए, लाइक फॉर कुकिंग ऑफ फूड इन रूरल एरियाज, ज्यादातर हम क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं. Now conservation of forest means the maintenance and upkeep of forest is called forest conservation. So the following steps should be undertaken to conserve them. First is plant harvesting. आपको क्या करना है, we should not cut all the trees in a certain area because this will result in erosion of fertile soil. Afforestation, growing plants on deforested land, और आपको क्या करना है, remove करना है forest को by growing plants is refers to as afforestation. Now protection from fire, आपको forest fire से protect करना है. Right, the main cause of forest fire or carelessness attitude of the people and natural activity. Forest fire can be controlled by spraying fire extinguisher. Protection from overgrazing. Overgrazing by cattle, horse, sheep is another important factor to deforestation के लिए responsible. Protection from insects and pests. Forest trees are also attacked by disease, spreading insects and pests. Infected plants also spread disease to other plants, and insecticides and pesticides should be sprayed on infected trees, जिससे हम क्या कर सकें, उनको सेव कर सकें. If we talk about wildlife, plants, animals and microorganisms, they live in nature and they are present in the wide natural habitat. So some important threats before wild animals are deforestation, poaching, illegal trading of fur, skin, bugs and teeth. Next is conservation of wildlife. India is a rich country in flora and fauna. It has India largest variety of flora and fauna in the world. यहाँ पे आपको varieties of concerns देखने को मिलेंगे. Right, so we can say that we have biosphere reserve, national park, tiger reserve. First is biosphere park, which is effectively implemented the methods of conserving forests and wildlife. Government has set aside permanent protected area, जिससे वो क्या कर रहा है, biodiversity को conserve कर रहा है. Like we have Panchmadi Biosphere Reserve consists of one national park जिसका नाम है सतपुड़ा और 2 wildlife
सेंचुरी, इनका नाम है बोरी एंड पंचमढ़ी। हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें से कुछ आपको दिए हुए, कोल्ड डेजर्ट जो आपका हिमाचल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, ग्रेट निकोबार अंडमान में, सिमलीपाल उड़ीसा और सुंदरबन आपके वेस्ट बंगाल। यहाँ पे आपको सारे बर्ड सैंचुरी, वाइल्ड लाइफ रिजर्व सब दिए हुए, यू कैन रीड द मैप। आप देख रहे हैं उत्तराखंड, आप उत्तर प्रदेश वाले में देखेंगे तो दुधवा हो गया, ठीक है, पंचमढ़ी आपका एमपी वाले रीजन में हो गया, राइट। दीज आर द डिफरेंट नेशनल पार्क्स आर गिवन। नाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. So wildlife sanctuary provide protection and suitable living condition to wild animals. Killing, capturing of animals strictly prohibited. What happens through this? Sanctuaries are used to increase the population of animals. Harvesting of timber, collection of minor products, and private ownership rights are also permitted. Important animals which are protected in the sanctuaries are given below. आपका black buck हो गया, elephant, golden cat, pink-headed duck, marsh crocodile, python, rhinoceros, etc. These are the different animals that are protected in the sanctuary. We have some important sanctuary like Bandipur, जो आपकी कर्नाटका में है, घाना, रतपुर, मानस, that is in Assam, Tadoba, Nagpur, Chilika, Odisha. Now national parks, they are meant for protecting and conserving life. जितनी भी forestry, grazing, cultivation है, ये permitted नहीं है. Private ownership is not allowed. There are 104 national park in the country that are spread across the country. फिर आपको गुजरात में, कान्हा मध्य प्रदेश में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, हाथीबाग झारखंड में और आपका काजीरंगा असम में. Now tiger reserve. The population of tiger in India are beginning to assume to be 40,000. But first tiger census जो हुआ था उसने बताया it has 1,411 था. So our government launched Project Tiger in 1973 to 1974, जिसमें क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन करनी है टाइगर्स. This result to this great effort of the project that a significant increase in the population of tiger has been seen. Right, then we have endemic species. Endemic species क्या है, they remain confined रहती है to specific. We have peacock, the national bird of India जो endemic है. Indian biodiversity is very rich as far as endemic animals and plants. We see in Northeast India, Western Ghats, Northwest Himalayan, and Andaman Nicobar. Now threatened species. We have many species that greatly reduce in number, that they likely to extinct. हो सकता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, उनका प्रॉपर केयर नहीं करेगा. Right? There is an international organization जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है, that is International Union of Conservation of Nature and Wildlife. इसका हेडक्वार्टर मोरे, स्विट्जरलैंड में. Let's study about the red data book. It which maintain the records of all the threatened animals and plants, right? यहाँ पे 497 mammals है, 1037 birds है, 343 fishes, 50 amphibians, 170 reptiles, 1355 invertebrates, right? It is categorized as threatened species into 3 categories. Present and the past जो आपका distribution है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, with the passage of time decline हो रहा है. आप देखेंगे कि time to time वो क्या हो रहा है, decline होता है. We have different category. First is endangered, जो वर्ड्स ऑफ एक्सटेंशन पे, मतलब हो सकता है आने वाले टाइम पे वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाए. जैसा आपका एशियाटिक लायन हो गया, इंडियन राइनोसॉर, क्रोकोडाइल और ग्रेट इंडियन बस्ट. वल्नरेबल स्पीशीज, दे मे गेट इनटू द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैक्टर्स दैट आर नॉट कंसर्न्ड विद द टाइम. लाइक वी हैव ब्लैक बक, गोल्डन लंगूर, चिंकारा डियर और ब्लू फीजन. Then we have rare species whose population are originally small and scattered in the world. They have been kept in the list of rare species. ये localized होते हैं, exhibit scattered population is there. ये vulnerable है, endangered है, हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में ये बिल्कुल ही खत्म हो. Like golden cat, moxie, great Indian bustard और wild duck. What are these? These are rare species जो बहुत कम दिखाई देते हैं. Right? These were the different types of species that I have told you. Now hope you understood the chapter. We will meet in the next class. Thank you.